Standard-1, or in short SS1. It is a standard which is issued by Institute of Company Secretaries of India (ICSI) to standardize the conduct of board meetings. It came into effect on 1st July 2015. It ensures uniformity, transparency, and good corporate governance. It is applicable to all companies which are incorporated under the Companies Act 2013, except one-person company which has only one director, and companies which are incorporated under Section 8 and have charitable purpose. This standard helps us in understanding the details and frequency of board meetings. A company should conduct at least 4 board meetings in every financial year, and the gap between 2 board meetings should not exceed 120 days. 120 डेज से ज़्यादा 2 बोर्ड मीटिंग के गैप एक्सीड नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है, और हम 4 से ज़्यादा मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, बट 4 से कम नहीं होना चाहिए। और एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना कंपलसरी है। मीटिंग कंडक्ट करने के लिए डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना होगा हमें एटलीस्ट 7 days प्रायर टू द मीटिंग बाय गिविंग देम अ नोटिस इन राइटिंग। It can be sent by hand, post, courier, email, or any electronic mode. A shorter period of notice is also allowed in case of urgent businesses. A notice shall contain the date, time, and venue of the meeting to be held, and all the agenda and business which are to be discussed in the meeting. Agenda refers to the business or decisions which are to be taken in the meeting, such as appointment of a new director, appointment of internal auditor, declaration of dividend, etc. It should contain explanatory notes along with agenda so that directors can stay informed for better decision making. For a board meeting to be valid, there should be a quorum present. Quorum refers to minimum number of directors which should be present for conduct of meeting. The quorum for board meeting 1/3 of total strength or 2 directors, whichever is higher. For example, एक कंपनी में अगर 5 डायरेक्टर्स हैं, 6 डायरेक्टर्स हैं, नहीं सॉरी 9 डायरेक्टर्स हैं, तो उसका 1/3 होते हैं 3 डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से हायर होगा 3 डायरेक्टर्स। तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। अगर कोरम स्टार्टिंग में सिर्फ नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, पूरी मीटिंग के थ्रू आउट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोरम नहीं रहता है तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है। एडजर्न का मतलब सेम डे नेक्स्ट वीक वो कंडक्ट होगी। डायरेक्टर्स फिजिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है चेयरमैन या फिर कंपनी सेक्रेटरी को, ताकि वो नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर सकें। चेयरमैन जो कंपनी का चेयरमैन होता है वही बोर्ड मीटिंग का भी चेयरमैन होगा, एंड इट्स हिज ड्यूटी टू इंश्योर दैट द मीटिंग इज कंडक्टेड विद डिसिप्लिन एंड डेकोरम इज मेंटेन्ड। Decisions are taken in a board meeting by passing a resolution. A resolution refers to any business or transaction which is discussed and decided by way of voting. Voting can be done by way of hand, postal ballot, or electronic voting. After the meeting is completed, minutes of meeting shall be recorded, and it should be finalized and signed by the chairman within 30 days of the conduct of meeting, and it should contain the date of meeting, number of directors present physically and number of directors present virtually, the resolutions passed, any appointments made, and number of quorum present. Minutes of meeting shall be, after it is finalized, it shall be circulated to all the directors. Attendance register shall also be maintained. It should contain details of all the directors which were present either physically or electronically. Minutes of the meeting shall be preserved permanently, that is throughout the life of the company, whereas notices, agenda, and other related papers shall be preserved for minimum 8 financial years. SS1 is necessary compliance for the companies. Non-compliance of SS1 attracts violation under Section 118 of the Companies Act 2013. Thank you.